Hello, family. So, important notice for all of you. I'm going to start a special series that will be consisting of almost eight shorts and videos on what will be the dying situation if you ever land up on the planets like Mercury, Mars, Saturn, Jupiter, Uranus, Neptune, etc. So, ऑल्दो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स अगर हमें बोलते हैं प्लैनेट्स कौन कौन से विषय लाइक इट्स मर्करी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून एंड बिंग प्लूटो आर ऑफ प्लैनेट ऐसे ये मॉडल बताते हैं राइट बट देयर इज अ ट्विस्ट वी विल स्टार्ट फर्स्टली विद वेनस अब आप सोच रहे होंगे कि पहले वेनस से क्यों तो इसके पीछे का लॉजिक और इसके पीछे का आंसर जो है यू विल गेट एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो बाय योरसेल्फ ओनली सो वी विल बिगिन हियर सुन के काफ़ी अच्छा लगता है ना कि वेनस पे जाएं विजिट करें काफ़ी अच्छा साउंड करता है बट इसके पीछे का आपको एक बहुत हार्श रियलिटी आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट विल हैपन if we landed on Venus? What will the dying situation will look like? Dying situation, exactly, dying. अगर आप लैंड करते हो वेनस के सर्फेस पे यू विल बी सब्जेक्टेड टू डेथ नॉट इन अ सिंगल वे इन मेनी वेज and in this particular video I'll try to cover up all those situations or scenarios possible there of the dying situation. So to start with, if you landed on Venus now, the high temperature is bare enough to kill you. The high temperature of Venus is so high that it will crush you just like that of a plastic bottle in a blast furnace. सुनने में काफ़ी अजीब सा साउंड करता ना बट दिस इज द ट्रूथ देयर you will be subjected to death just like a plastic bottle. This is the plastic bottle. You will be subjected on sea. This is the surface of Venus. You landed upon that, and the temperature will crush you there. Oh my god, the situation is very deadly there, and it will take hardly 5 seconds, barely a couple of seconds, to make you succumb to death on the surface of Venus. थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं. So, see, Venus is having extremely dense atmosphere, and we know that atmosphere is mainly consisting of what? Fluids, gases. Gases are fluids only, na? And we have studied a particular law in physics that P is equals to gamma times of H. What does this mean? This means that as if you increase the density of the fluid, the pressure will also going to increase, keeping the height same. This is the case exactly on the surface of Venus. The density of the atmosphere is very, very, very high compared to the Earth's atmosphere because the pressure is also very, very, very high. And guys, आप shock हो गए, I don't know. But the pressure at Venus के surface पे that is approximately 93 times the pressure on the surface of the Earth. Exactly, you heard it right. It's 93 times. 93 is a big number. एक छोटा सा एग्जांपल आपको देखे इसको क्लियर करता हूँ कि 93 टाइम्स प्रेशर मतलब क्या आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. इफेक्ट आपकी बॉडी रहेगी ही नहीं उस इफेक्ट को विटनेस करने के लिए. यस, सो बेसिकली जो प्लैनेट है अर्थ जिस पे हम सर्वाइव कर रहे हैं राइट नाउ, सो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर और शुड आई से दैट ह्यूमन बॉडी कैन विथस्टैंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 14.5 psi. psi refers to pounds per square inch or 15 psi. You know what? At a pressure of 500 to 1000 psi, your bones, haddiyan, your bones start crushing. And the pressure on Venus is, बोल दूँ, it's 1350 psi. कहाँ आपने रेंज बोला 500 से 1000 psi बोन्स क्रश होने स्टार्ट हो जाएंगे. प्रेशर है 1350 psi. सोचो क्या होगा आपका. You will be completely lost. Your existence will completely vanished. This is the scenario on the surface of Venus. Even your space suit that you are wearing for the purpose of protection, for the purpose of continuous oxygen supply, that space suit will itself get crumbled into pieces. Oh my god. And you will suddenly feel something like you are being getting succumbed to death. In the next 2 seconds you will feel nausea, vomiting, and you will lose your consciousness and your life will get over and over. This is the scenario on the Venus.
और ये केवल एक तरीका नहीं है जो वेनस अडॉप्ट कर सकता है हमें किल करने के लिए. देयर आर सेवरल अदर वेज. और सेकेंड हो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. द सेकेंड वे दैट वेनस कैन अडॉप्ट टू मेक यू सक्कम टू डेथ इज नन अदर देन the dense atmosphere that we talked earlier only. So Venus is extremely hot. हमने शुरू में ही बोला था वीडियो के कि Venus is basically very hot and it can crush you just like a plastic bottle in a furnace. Hot qualitatively तो मैंने बोल दिया hot. How much hot? 50, 60, 100, 200. No, my friend, no, it's not just 200, it's 465 degrees Celsius. The temperature on the surface of the Venus, or we can say the Venus atmospheric temperature, is approximately 465 degrees Celsius. Oh my god, 465 degrees Celsius. That is even hotter than the lava that is coming from the volcanoes that are present on the surface of the earth. वॉल्केनो से जो लावा आ रहा है उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर वेनस के अर्थ एटमॉस्फेयर का है. लावा से ही आपकी पूरी स्किन मेल्ट हो जाएगी, तो उस टेम्परेचर पे आप क्या ही करोगे फिर. सपोज यू हैव लैंडेड ऑन द सर्फेस ऑफ वेनस बियरिंग अ स्पेस शूट. सो व्हाट विल हैपन, द टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई देयर, दैट इज 465 degrees Celsius. So what will happen, the body temperature will suddenly rise at that particular temperature. You will continuously feel nausea, vomiting, fatigue, etc. A time will come after few seconds, or we can say after minutes, when you will be completely losing your consciousness. You will suffering from brain damage and cardiac arrest, and the life will completely end there. Your existence will completely over there. नॉट ओनली दिस, इसके अलावा भी वेनस बहुत कुछ कर सकता है आपको वहाँ पे कंप्लीटली फिनिश करने के लिए. द थर्ड वन, वेनस का जो डेंस एटमॉस्फेयर है दैट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अप्रोक्सीमेटली 3.5% नाइट्रोजन. कार्बन डाइऑक्साइड हम सभी को पता है कि हाउ मच डेंजरस इट इज. इवन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ वी आर कंटिन्यूसली फेसिंग climatic changes because of increased temperature, global warming, greenhouse effect and all. That is primarily because of carbon dioxide only. अगर गलती से भी आपके स्पेस सूट में कोई ब्रीच हुआ, कोई होल हुआ या कोई क्रैक डेवलप हो गया, एंड इफ अगर आप सफोकेट हो रहे हो और आपने अपना गलती से मास्क हटा लिया जस्ट टू ब्रीथ द एयर ऑन वेनस, a single molecule of carbon dioxide is bare enough to make you succumb to death on the surface of Venus itself. You will suffocate to death. Lastly, अभी एक और है. Yes, lastly यही नहीं, Venus is subjected to sulfuric acid rain, that what we called as acid rain. The sulfuric acid rain is actually concentrated sulfuric acid rain, not very much concentrated, but yet it's concentrated, and that will basically corrode your spacesuit. Your spacesuit will get collapsed, and as soon as your spacesuit will collapse, you will also get collapsed. Your life will get overall damaged, destroyed, and your existence will completely get finished. This much deadly is the scenario on Venus. आपको याद है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आप सोच रहे होगे कि इन्हें तो मरकरी से स्टार्ट करना चाहिए, पर ये वेनस क्यों लिया इन्होंने, ऑर्डर डिस्ट्रॉय क्यों कर रहा है. इसीलिए डिस्ट्रॉय किया क्योंकि वेनस के पास सिर्फ एक तरीका नहीं है आपको किल करने के लिए. इट हैज़ मेनी वेज टू मेक यू किल, एंड दिस इज द मोस्ट डेडली सिचुएशन दैट कैन इवन अराइज ऑन अ प्लैनेट. एंड आई थिंक वेनस जो है इस मामले में सबसे खतरनाक है. इट्स द मोस्ट डेंजरस वन. सो आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे मरकरी के बारे में. सो स्टे ट्यून फॉर such upcoming shorts and subscribe my channel अगर आपने अभी तक नहीं किया. And with this I finished this complete lecture and I say you tata bye bye.